So today we'll be starting off with our new topic which is known as writing equations. आप लोगों को केमिकल फॉर्मूलाज तो बनाने आ गए हैं, ठीक है। हाउ डू वी मेक केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। आपको उसके लिए एक तो पीरियोडिक टेबल गिवन है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू द मोस्ट। अगर आपको पीरियोडिक टेबल देख के एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता लग गया है तो आप उस ग्रुप नंबर से उसका चार्ज बता सकते हो और फिर आपको पता है कि हाउ टू क्रॉस द चार्जेस। लेकिन कुछ एले ऐसे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं which are not present in the periodic table. For example, फॉस्फेट विच वॉज 3 माइनस, राइट। उसके बाद हमने एक पढ़ा सल्फेट, SO4 विच इज 2 माइनस। फिर एक होता है आपका जैसे नाइट्रेट, नाइट्रेट इज -1। देन वी हैव कार्बोनेट, CO3 -2, ये भी नहीं है पीरियोडिक, ये सारे मेमोराइज करने वाले। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH -1, ठीक है। फिर आपके पास SO2 आ जाता है, सल्फाइड, ठीक है। सॉरी, SO3 आ जाता है -2, ये आपके पास सल्फाइड है। फिर आपके पास एमोनियम आ जाता है विच इज NH4+1। तो बहुत से आपको ऐसे हैं जो मेमोराइज करने पड़ते हैं, वी कॉल दीज द पॉलीएटॉमिक आयंस। अब जब आपको एक दफा केमिकल फॉर्मूला बनाना आ जाता है, एक जल्दी से आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। लेट्स से अगर कोई मुझे कहता है कि मेक द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट में कैसे बनाऊंगा, मुझे पता है कि जो कैल्शियम है वो क्या होता है, ग्रुप 2 में आता है तो इट्स 2+। और फॉस्फेट क्या होता है, PO4-3, राइट। तो इनके चार्जेस क्रॉस कर दे तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, Ca3। लेकिन जो PO4 है वो पॉलीएटॉमिक आयन है, उसको मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इस पूरे PO4 के साथ क्या आ जाएगा, 2। दिस इज नोन एज कैल्शियम फॉस्फेट। समझ आ गया सबको? इज इट क्लियर? जी सर। अब जब आप लोगों को केमिकल फॉर्मूलाज बनाने आ ही गए हैं तो फिर हम किसी भी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक केमिकल इक्वेशन होती क्या है ये, व्हाट आर दीज वर्ड इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस? दीज केमिकल इक्वेशंस शो यू द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग देयर फुल केमिकल नेम्स। एरो का क्या मतलब होता है, एरो आपको ये बताते हैं कि जनाब ये रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। आप कुछ खाने के इंग्रेडिएंट्स लाए थे, उन इंग्रेडिएंट्स ने मिलके आपको फूड प्रोड्यूस कर दिया, यू हैव फाइनली कुक्ड द डिश। बिकॉज बाय यूजिंग दीज इंग्रेडिएंट्स यू हैव फाइनली कुक्ड अप फुल प्रॉपर मील। और किसी भी रिएक्शन के वक्त, कोई भी जब रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स हमेशा कम होते जाएंगे और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ज्यादा होता जाएगा, विच इज अ कॉमन सेंस, क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन कंडीशंस और द नेम ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी रिटन अबव द एरो। If one is a metal and the other is a non-metal, then the name of the metal atom comes first and the ending of the second atom is replaced by "ide". हमने जैसे कि अब ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसके अंदर जो एटम्स के नाम क्या थे, Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब है क्लोरीन। लेकिन हमने इसको नेम कैसे किया था, नेम करते वक्त सोडियम तो सोडियम ही रहा, लेकिन क्लोरीन को हमने क्या बना दिया, क्लोराइड। एंड पे क्या आ गया, आइड आ गया है, बिकॉज द नॉन मेटल का नाम हमेशा चेंज हो जाएगा व्हेन वी आर मेकिंग अ कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड में, सोडियम तो खैर सोडियम ही नहीं, क्लोराइड बेसिकली क्लोरीन था। सो उस क्लोरीन को हमने क्लोराइड का नाम दे दिया व्हेन वी राइट इट इन अ वर्ड फॉर्म। फिर कुछ और रूल्स होते हैं कि जैसे अगर कोई ऐसा केस आ जाए, चलो अगर एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड में तो हमें पता है कि हमेशा पहले मेटल लिखा जाता है और फिर नॉन मेटल लिखा जाता है, राइट। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम पहले लिखेंगे, क्लोराइड बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों साथ लिखने हैं, तो पहले कौन सा लिखोगे? कुछ में प्रेफरेंसेस होती है दैट वी ऑलवेज चूज हाइड्रोजन फर्स्ट, मोस्टली हाइड्रोजन कम्स फर्स्ट। तो अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन का नाम तो हाइड्रोजन ही रहेगा, बट क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। एंड वी कॉल इट हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन इज +1, क्लोरीन ग्रुप 7 में आता है विच इज -1। तो क्रॉस कर लो, चार्जेस सेम नंबर है तो HCl बन जाएगा। For other combinations of non-metals, as a general rule, the element that has a lower group number comes first in the name. For example, carbon and oxygen combine to form CO2, which is a carbon dioxide, since carbon is in group 4 and oxygen is in group 6। तो नॉन मेटल्स में कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन वो इतनी कॉमन है दैट यूल गेट टू नो दीज एज वेल। और कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स मैंने कहा था मेमोराइज करने हैं, जिनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं, जैसे कि कार्बोनेट आयन,
सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन। इसका मैंने टेबल भी शेयर किया हुआ इन द ग्रुप, जो आप लोगों को मेमोराइज करने, ओनली देन you guys will be able to make those difficult chemical formulas as well. When these ions form a compound with a metal atom, जाहिर सी बात है मेटल को पहले लिखेंगे। जैसे अगर मुझे कोई कहता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा? अब सोडियम मुझे पता है ग्रुप 1 में आता है, और कार्बोनेट का मुझे मेमोराइज करना है दैट CO3 इज -2। तो पहले हमेशा मेटल लिखेंगे, Na के साथ आ जाएगा वो CO3 का 2, और CO3 के साथ वो 1 आ जाएगा। मतलब कि कुछ भी ना लिखूं, 1 का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, आप बेशक ब्रैकेट डाल के 1 लिखोगे, दैट इज द सेम थिंग। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, तो दिस वुड बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाउ हैव आई मेड दिस? इज इट क्लियर एवरीवन? Another example is given, potassium hydroxide। पोटेशियम क्या होता है? ग्रुप 1 में आता है, इट इज +1। हाइड्रोक्साइड याद रखना है, OH है, -1। सेम नंबर्स हो गए, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? KOH। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? कैल्शियम +2 होता है, कार्बोनेट -2 होता है, दोनों सेम नंबर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा? CaCO3, जो उसका अपना नाम था। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। और जब एक दफा हम एक केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे ना, फिर उसको अगली बहुत जरूरी चीज आती है, उसको बैलेंस करना है, जिसके ऊपर हमारा मोस्ट ऑफ द लेक्चर आज का शायद बेस्ड हो, ऑन मेकिंग वर्ड इक्वेशंस, converting those word equations into chemical equations and then balancing those chemical equation। इधर से ही आपकी बेस स्ट्रांग होगी in order to start stoichiometrical calculations and the moles chapter। और कुछ रूल्स में एक ये भी आता है कि कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि हमेशा एज टू एग्जिस्ट करते हैं। मोहम्मद खान, कैन यू टेल मी व्हाट आर दोज नॉन मेटल्स जो हमेशा डायटोमिक होते हैं? जी, मोहम्मद मोहम्मद आप बताओ। सर, ऑक्सीजन, ठीक है, हमेशा O2 होगा। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, और 7 है टोटल। हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये हमेशा एज टू एग्जिस्ट करते हैं, अकेले नहीं होंगे। गॉट इट? जी सर। गुड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। NaOH और HCl, ये दोनों क्या हैं? इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। फिर सोडियम क्लोराइड और वाटर, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। If there is a group of atoms, for example, a nitrate group that has not changed from one side to the other, then count the whole group as one. There are also equal numbers of each atom। तो ये एक balanced equation है। How is it a balanced equation? अगर आप दोनों साइड्स पे देखो, रिएक्टेंट्स में एक सोडियम है, राइट साइड पे एक सोडियम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, राइट साइड पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, एक ये रहा और एक ये सर रहा। रेशियोज। एग्जैक्टली, राइट साइड भी कितने हैं? दो हाइड्रोजन है। क्लोरीन लेफ्ट पे एक था, राइट साइड भी एक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट द केमिकल इक्वेशन, जो हमने देख लिया दैट वन केमिकल इक्वेशन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम अ रिएक्टेंट एंड गोज टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट। हर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। And in a balanced equation, the number of atoms in the reactants and the number of atoms in the products are always going to be same। Chemical equations can sometimes look a bit daunting, especially when there are lots of different compounds and state symbols involved. But fear not, to help in this lesson about chemical equations. Quite simply, a chemical equation shows the overall chemical change of reactants into products. It's a bit like a detailed cooking recipe, but where all the ingredients and all the products are written down, even the ones you can't necessarily see. The reactants are what you start with, and the products are what are formed. There are two ways of writing chemical equations: word equations and symbol equations. When they are written, both types show the reactants on the left of an arrow and the products on the right. The arrow is there to show that the reaction is irreversible. If you like, it shows the direction of the reaction and that it is one way,
A bit like a one-way street. You can't reverse along a one-way street, and you can't reverse an irreversible reaction. Let's look at a word equation. This is a way of summarising a chemical reaction. For example, the neutralisation of hydrochloric acid with sodium hydroxide. We would write sodium hydroxide plus hydrochloric acid, then the arrow, sodium chloride plus water. The plus sign indicates that there is more than one reactant or product on each side of the equation, and you'll note that the reactants are on the left and the products are on the right. We've also written this all on a single line. It makes it a lot easier to read this way. So when you write your equations, try to keep all of the information on a single line. If you can't, then the arrow becomes an important separator. The rule of reactants on the left and products on the right still applies, because if not, the equation can become a jumbled mess. A clearly written equation is always easier to understand. A word equation provides a good summary, but a symbol equation provides more information. It shows more detail and allows us to see how many atoms and molecules are involved in each reaction. So if we look at the neutralization equation again, the symbol equation is written NaOH plus HCl as the reactants, then an arrow to indicate the irreversible reaction, which gives NaCl plus H2O as the products. The little letters in brackets are state symbols. They show the state of matter of each product and reactant, and this is covered in more detail in our lesson, State Symbols in Chemical Equations. There are occasions where a reaction is reversible due to the changes in the surroundings, for example pressure, concentration, pH and temperature. And where this is the case, we draw a double arrow made of two half arrows pointing in opposite directions. And this indicates that the reaction can go either way. The formation of ammonia from nitrogen and hydrogen is an example of a reversible reaction. And the key thing here is that you recognise the reversible reaction by the double arrows. And you'll note some numbers in front of the hydrogen and ammonia formulae, and these are there to make the equation balance. You can find out more about this in our balancing equations lesson. And so to summarise, a chemical equation shows the overall chemical change of reactants into products. We usually write reactants on the left of the arrow and products on the right. A single arrow means that the reaction is irreversible, and two oppositely pointing half arrows means the reaction is reversible. And that completes our overview of chemical equations. फिर आप एक और चीज नोटिस करोगे, whenever we make a chemical equation, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट्स बताना भी जरूरी है कि क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस है, और इज इट एक्वस. कैन समवन टेल मी द मीनिंग ऑफ एक्वस? Sir, it is dissolved in water. इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, उसने एक सोल्यूशन बना लिया. मोस्टली जैसे आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम टर्म एक्वस यूज करेंगे. ठीक है, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन. So state symbols are also written after formula in chemical equations to show which physical state each substance is actually in. अब ये एक एग्जांपल है, पहले हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं on how to make let's say chemical equations. Let me show you. अगर मेरे पास एक सवाल आता है that form a chemical equation where calcium रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. हमें पता है कि कैल्शियम हमेशा एज वन एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन हमेशा एज डायटोमिक एग्जिस्ट करता है. कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaH2+ और ऑक्सीजन -2 होता है, तो वो कैंसल आउट होके CaO बन जाएगा. ठीक है, प्लस इनकी स्टेट्स लिखना जरूरी है और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएंगी. अभी हम उन स्टेट्स को ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, दैट हाउ डू वी हैव टू राइट देम डाउन. कि कुछ मेटल्स होते हैं दैट ऑलवेज एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 and 2. ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी अ गैस,
और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एक ब्लैक सा सॉलिड बना देता है आपके पास, वाइट सा। इट्स अ वाइट सॉलिड जिसको हम लाइम का भी नाम देते हैं। इट कैन बी डिजॉल्व्ड एज वेल, फिर उसको हम लाइम वाटर कहेंगे। इट कैन बी सॉलिडिफाइड एज वेल, उसको फिर हम लाइम स्टोन कहेंगे। एंड देर आर मैनी डिफरेंट टाइप जो भी आप आगे अपने सिलेबस के अंदर भी पढ़ोगे। नाउ दिस कैल्शियम एंड ऑक्सीजन are both known as the reactants, and this calcium oxide is known as the product. तो always while forming word equations you are supposed to know the chemical formula को बनाना कैसे। once you know how to make a chemical formula, आपके लिए बहुत easy हो जाएगा in order to make any type of chemical equation. Let me show you another thing. किधर ये पीडीएफ थी। वर्ड टू केमिकल इक्वेशंस, और फिर हम एक वर्कशीट अभी बैठ के स्टार्ट कर लेते हैं एज वेल। I am big Swifty. Professor Dave here. Let's learn how to write chemical bit about chemical reactions, as well as the written equations we can write to depict them. But there are a few different ways we can write these equations. We should be able to write them using chemical formulas, which abbreviate all the elements present in each compound, and sometimes list the phases of each compound. But we should also be able to write these equations using words, because this helps us understand how we might verbally communicate the details of a chemical reaction to someone else. Let's therefore make sure that we can do two things. We must be able to look at a chemical reaction that is written with symbols and translate it into written words. And we must also be able to do this in reverse, by taking a sentence that describes a chemical reaction and making sure we are able to display this transformation using the symbols we know in chemistry. Take this reaction, for example. We have Na solid plus H2O on the reactant side, and then NaOH in the aqueous phase and H2 in the gas phase on the product side. Let's turn this equation into a sentence comprised of normal words. Starting from the left, Na is sodium, and it's a solid, so we might simply say solid sodium metal. Now, what does the sodium react with? We all know H2O is water, and the L means liquid, so let's add reacts with liquid water. Now, the forward arrow separates the reactants from the products, so we need words that indicate that a chemical reaction has occurred. So let's say to produce. And now we list the products. NaOH is sodium hydroxide, and it's in the aqueous phase. So we write aqueous sodium hydroxide. And H2 is hydrogen, which is a gas. So we write hydrogen gas. And now we have completed a sentence that describes in words what the equation describes in symbols. Let's go the other way around. Say we have the following sentence. Solid iron reacts with fluorine gas to produce solid iron 3 fluoride. Let's identify some key words here. Reacts with tells us that iron and fluorine are the reactants, and produce tells us that iron 3 fluoride is the product. So those should be separated by an arrow. Now let's translate the words into chemical symbols and phase symbols. The symbol for iron is Fe, and it's a solid, so let's write Fe with the subscript S in parentheses. Then we put a plus symbol because the iron is reacting with something else. Fluorine has the symbol F, and fluorine gas is F2, which we know from our ability to draw Lewis dot structures. So let's write F2 with the subscript G in parentheses. Then the forward arrow separating the reactants from the products. And lastly, we have iron 3 fluoride. So we know the product has iron and fluorine in it, but in what ratio? If we recall, this Roman numeral 3 is telling us the oxidation state of the iron atom.
सो रिमेंबर वन थिंग कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक अनदर वर्ड है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका मतलब भी चार्ज ही होता है। दैट व्हाट्स द चार्ज ऑन एन एटम और अ कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट या हो या चार्ज लिखा हो, इट्स द सेम थिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों कहते हैं चार्ज को, वो हम आगे जाके रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पढ़ेंगे, विच इज चैप्टर 10। which will be +3. Fluoride ions are -1, so we will need 1 iron and 3 fluorides to make a neutral molecule. So we write FeF3 with the subscript S. Lastly, we might want to balance the equation. We can see that we have 2 fluorines on the left and 3 on the right. So let's put a 3 here and a 2 there, so that we have 6 on each side. Now we also have 2 irons on the right, so let's put a 2 here so that we have 2 irons on the left as well. And that's all there is to it. So we should now be able to write chemical equations either with symbols or with words. Let's check comprehension. अब आप इस इक्वेशन को देखो। यू आर गिवन द इक्वेशन 2NaOH प्लस FeCl2 फॉर्म्स NaCl एंड FeOH2। तो NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? आयरन 2 क्लोराइड के साथ। वाई इज इट आयरन 2 क्लोराइड? क्योंकि आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा ना, इसलिए क्लोरीन के साथ 2 आया है। तो पहला तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल है। दूसरे का नाम है आयरन 2 क्लोराइड। अगर ये होता FeCl3, देन इसका मतलब होता है कि ये था आयरन 3 क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे FeCl2 है, मतलब कि Fe का चार्ज क्या था? +2। सो इट इज गोइंग टू बी आयरन 2 क्लोराइड which is forming the following products which include sodium chloride and यहाँ पे दोबारा आ जाएगा आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड नहीं, अगर यहाँ पे OH3 होता तो वी वुड से आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। उसके बाद वो कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू सिंबल्स। तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, मतलब कि Ca प्लस H2O फॉर्म्स व्हाट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा? कैल्शियम इज +2 एंड हाइड्रोक्साइड इज -1, तो क्या हो जाएगा? CaOH2। 7 हाइड्रोजन गैस बनेगी, मतलब कि H2। चेक कर लेते हैं, ठीक है? सो यू गाइस कैन गेट इट, और फिर हम कुछ और भी प्रैक्टिस करें। So you can see over here sodium hydroxide, iron 2 chloride, sodium chloride and iron 2 hydroxide। और इसी को अगर हमने वर्ड इक्वेशन को आपने देखे नीचे, केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट कैसे हुई है? Ca+H2O forms CaOH2। Why is it CaOH2? Because calcium has a charge of +2, OH has a charge of -1 and it forms hydrogen gas। Is it clear? समझ आ गया? How to make these chemical equations? Everything clear till now? Word to Yes, chemical sir. equations and chemical to word equation.